हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? जैसे थर्मोडायनेमिक्स होता है वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द थर्मल और हीट चेंजेस कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रॉड ब्रांच है जिसमें थर्मल और हीट चेंज केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। When the internal energy of reactant is greater than the internal energy of reactant, the difference of internal energy is released as heat energy. Such a reaction is called as exothermic reaction, and similar way we can define the endothermic reaction. Internal energy of the reactants is greater than the internal energy of the products, then the difference of internal energy is released as the heat energy. So, change in internal energy delta E is equal to internal energy of product minus internal energy of reactant. That reactions are called as exothermic reactions and vice versa for endothermic reactions. Now, what is the enthalpy of reaction? The heat exchange in a chemical reaction, the heat exchange in the chemical reaction is called as enthalpy of reaction. When it is take place at constant pressure, then it is called as enthalpy of reaction at constant pressure. Let QP is the heat change in the chemical reaction taking place at constant pressure, then delta H is equal to QP, change in heat at the constant pressure. In general, HR is the enthalpy of reactant and HP is the enthalpy of the products. Then change in enthalpy delta H will be equal to HP minus HR. Enthalpy of the product minus enthalpy of the reactant. When HP
less than HR, the reactions is said to be exothermic. When HP greater than HR, the reaction is said to be endothermic reaction. जब हमारे पास प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जब हमारे पास प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नाउ यहाँ पर अगर डेल्टा एच की बात करें तो जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होगी तो वहाँ पर हमारा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, और जब हमारे पास प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। तो हमारे पास रिएक्शन में इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ वी कैन डिफाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मे बी कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज। द amount of heat change during the chemical reaction carried out at constant temperature and constant pressure may also be called as enthalpy change। उसको हम एंथैल्पी चेंज के नाम से जानते हैं जो हमारे पास हीट चेंज किसी रिएक्शन में होती है। सो द हीट ऑफ रिएक्शन may be defined as the amount of heat absorbed or evolved in a reaction when the number of moles of reactants are represented by the valent reaction change completely into the products. So, the heat of a reaction may be defined as the amount of heat absorbed or evolved during the reaction when the number of moles of reactants in a balanced reaction is completely converted into the products। जब हमारे कंप्लीटली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 एरो, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करती हैं तो यहाँ पर हीट चेंज यहाँ 284.5 किलो जूल मोल के बराबर होता है, जो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। द हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन, द हीट चेंज
in a chemical reaction at 298 degree Kelvin and 1 atmospheric pressure is called as standard enthalpy change, and it is denoted by delta H naught. जब कोई रिएक्शन हमारी 298 डिग्री केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराई जाती है तो उस रिएक्शन में जो हीट चेंज होता है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के नाम से जाना जाता है या स्टैंडर्ड हीट चेंज के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज़ डेनोटेड बाय डेल्टा H नॉट। इसको हम डेल्टा H नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।